Namaskar, hello and a very warm welcome to this webinar series, Listening to Learn. I'm Tanvi Khurana and you're watching us on eVidya channel number 9, 10, 11 and 12. So here we are with a special session because this is our 50th session. This program started 1.5 years back and today we have reached a point where we are discussing a very special topic with all of you. And that is silent pandemic of superbugs, जिसे हम कहेंगे superbug की मूक महाकारी. आप सभी ने महामारी सुना होगा, अभी हमने कोविड पैंडेमिक देखा है और उसमें बहुत कुछ देखा है, पर सुपर बग्स की महामारी क्या होता है? क्या ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, क्या एक फंगस है, क्या वायरस है? बहुत कुछ है जानने के लिए. अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं कि सुपर बग्स किस वजह से होते हैं, ये महामारी के रीजंस क्या हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. नंबर है 8800440559 और इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि है NCERT ऑफिशियल. उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं. 11 बजे तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे. हमारे साथ 2 गेस्ट्स हैं जो कि हमें सुपर बग्स के बारे में बहुत कुछ बताएंगे. तो आइए आपका परिचय करवाना चाहेंगे डॉक्टर राजेश भाटिया से. A very warm welcome to you, sir. Thank you. Namaskar. And we have with us Dr. S.K. Chopra. Sir, a very warm welcome to you too. Welcome to you. And we have with us the host of this program. He is Dr. Gagan Gupta. You all know him. So I would request Dr. Gagan Gupta to introduce our guest to all of you. But before that, let me tell you कि 1.5 साल पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था और हमारा जो पहला प्रोग्राम था उसमें CSIR के एक गेस्ट थे और आज भी हमारे साथ CSIR के ही गेस्ट हैं डॉक्टर S.K. चोपड़ा. और it's a pleasure for us that he is here and this program is going to be successful for sure. तो इस प्रोग्राम को पूरी तरह से आयोजित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स NCERT ने. और ये प्रोग्राम है नेशनल स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम, जिसे हम कहेंगे प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क और इंटीग्रेटिंग इंडियन डायस्पोरा विद द मदरलैंड. क्योंकि ये एक आम प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम आप कहीं पे भी देख सकते हैं. स्पेसिफिकली इंडियन डायस्पोरा के लिए अगर आप देश से बाहर हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और बहुत सारी बातचीत होने वाली है आज के इस प्रोग्राम में. तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, दैट इज रिगार्डिंग India's G20 presidency. Well, we're extremely proud that India assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year, that is 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or should I say the world is one family. So let me please ask Dr. Gagan Gupta. Sir, I request you to please introduce our experts and this entire program and the special topic with all our viewers. Namaskar. Thank you, Tanvi, for having this special session at CIET Studios, New Delhi. दोस्तों, ये प्रोग्राम हमने अगस्त 2021 में शुरू किया और आज हम 50वें पड़ाव पर हैं. आज हम 50वां सेशन कर रहे हैं. हमने इस सीरीज़ में हेल्थ से जुड़े हुए, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए, साइंस के जुड़े हुए, बैटरीज से जुड़े हुए कई सारे विषयों पर बात की है. आज का दिन सबसे पहला सेशन था, वो भी हेल्थ से जुड़ा हुआ था, न्यूट्रिशन पर था, जिसमें कि हमारे साथ रश्मि कुलकर्णी दोहा कतार से जुड़ी हुई थी. आज 50वें सेशन में फिर से हमारे साथ हेल्थ से जुड़ा हुआ ये एक इशू है सुपर बग्स के ऊपर. आज मेरे साथ 2 लोग हैं जो कि हेल्थ से जुड़े हुए विषयों पर काम करते हैं. मेरे साथ मेरे दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर S.K. चोपड़ा, जो कि हमारे लिए बड़े अहम हैं, इस सीरीज़ के लिए बड़े अहम हैं. क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम हमारा CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली के कोलैबोरेशन में चलता है. और आज CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो कि CSIR का एक प्रक्रम है, उसके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से यहाँ आए हुए हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त डॉक्टर चोपड़ा. और आज के कार्यक्रम के, आज के सेशन के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश भाटिया, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं.
और बहुत सीनियर हैं, हम सब लोगों के शिक्षक हैं। और उनसे जब मैं मिला हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि आज मैं अपने शिक्षकों के भी शिक्षक से मिल रहा हूं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया हमारे स्टूडियो में। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज बड़ा मजा आने वाला है इस हेल्थ के इशू पर। दोस्तों, सुपर बग्स इन ब्रीफ एक ऐसी प्रजाति है जो कि एक बैक्टीरिया की भी जुड़ी हुई हो सकती है, वायरस से भी जुड़ी हुई हो सकती है, फंजाई से भी जुड़ी हुई हो सकती है। और ये प्रमुखतः कुछ इस तरह की प्रजाति है जिस पर कि एक आम भाषा में कहें, जिस पर कि एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर नहीं होता। ये एक महामारी लिए हुए हैं। शायद इसकी महामारी का आयाम कोविड की महामारी के आयाम से भी बड़ा हो सकता है, और हम पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और इससे बचने के उपाय ढूंढ रहा है। आज मेरे साथ डॉक्टर चोपड़ा हैं जो कि CDRI लखनऊ में सीनियर साइंटिस्ट हैं, और इनका काम ड्रग डेवलपमेंट, एंटी इन्फेक्टिव डिस्कवरी फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरिया पर काफ़ी है। ही इज इंटरेस्टेड इन प्रोटीन evolution in benefiting biotechnological gadgets, etc. And he is specialized in assay optimization, lead development, structure and activity relation, molecular biology and biochemistry. मैं अपने दोस्त चोपड़ा साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रोग्राम के बिहाफ पर, इस सीरीज के बिहाफ पर डॉक्टर भाटिया का स्वागत करें और उनके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। डॉक्टर चोपड़ा प्लीज। I very much thank NCRT and Dr. Gupta for this very kind invitation. It's very timely that this issue is being told to everyone, because it's a major issue in all the healthcare worldwide systems. And in this context, I'll be introducing Dr. Bhatia. Dr. Bhatia is a very experienced medical doctor with over 45 years of experience in this field of communicable diseases as well as antibiotic and AMR. He has worked for 20 years in leading national institutes, after which he has joined the World Health Organization, and he is superannuated in 2015 as the Director of Communicable the Diseases for Southeast Asia. Then he is now working with FAO as the Senior Technical Advisor on Drug Resistance, and working with FAO he has catalyzed the establishment of the Indian network for the fisheries and animals related to AMR, and has helped in making the protocols for the estimation of usage of antibiotics in this very important the field. He has also contributed to the World Health Organization global action plans on AMR, and has been very important in catalyzing the national action plan for India for the year 23 to 27. He has been recently appointed to the World Health Organization, the FAO, UNEP and WOAH quadripartite global technical group as an expert on AMR. He has been a WHO member panel on infectious diseases, a member of various WHO committees on essential diagnostic lists, the chair of the ICMR tag on AMR proposals, and the chair of the BIRAC tag on the Grand Challenge on AMR. He has authored more than 160 articles, 18 books, 45 chapters and numerous editorials. Recently he has drafted the National Framework on One Health for the FAO. He's been honored by various gold medals by the Indian Association of Vaccinologists, the Indian Association of Malaria and Communicable Diseases, and the Indian Association of Medical Microbiologists in 2018. On behalf of India and NCRT, I welcome Dr. Bhatia to this very important presentation. Sir, you're welcome. Thank you very much, Dr. Chopra and NCRT team, for giving me this opportunity to share some of my thoughts with the wide audience that this program reaches out to. जितने भी लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, भारत में या भारत के बाहर कहीं भी, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज के इस सेशन का जो टाइटल है वो है साइलेंट पैंडेमिक ऑफ सुपर बग्स। 3 शब्द हैं इसमें, साइलेंट, पैंडेमिक और सुपर बग्स। Let's start with each of these 3 so that we understand what we are going to talk about during next 40 minutes or so. What is a superbug?
सब पॉपुलेशन, जैसा कि अभी गगन जी भी बता रहे थे, दिस इज ए सब पॉपुलेशन of existing species of bacterium that is not killed or inhibited by a large number of affordable antibiotics and causes untreatable disease in humans and animals. The thing which you must understand from this definition is that this is something which belongs to the existing pathogens or bacteria, and it is not a novel or mysterious pathogen. It's not something which is single entity. It can be any of the bacterium with which we are affected and the animals are affected around the world. What is pandemic? Again, अभी आपको बताया गया pandemic और महामारी, जैसे कोविड से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी डेफिनेशन देखना चाहें, a pandemic is an epidemic or larger than anticipated infectious diseases that is spread over multiple countries और कॉन्टिनेंट्स. शुद्ध हिंदी में बोलना चाहे तो विश्वव्यापी कोई ऐसी बीमारी जो सारी दुनिया में फैली हुई हो, उसे हम महामारी कहते हैं. एग्जाम्पल आप सबको पता है, फ्लू का पेंडेमिक 2009 में हुआ और कोविड का जो 2019 में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है. अब आप इस चीज़ को हमारे सुपरबग्स के साथ देखिए तो सुपरबग्स भी बहुत से कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड बीमारियां कर रहे हैं, लोगों में मोर्टेलिटी कर रहे हैं, लोग उससे मर रहे हैं, लोगों में बीमारी कर रहे हैं. इसीलिए हम सुपरबग्स को भी पेंडेमिक कहते हैं. लेकिन इस पेंडेमिक में और कोविड के पेंडेमिक में या उससे पहले जो फ्लू और प्लेग के पेंडेमिक होते थे, एक बहुत बड़ा फर्क है जो मैंने टाइटल में भी नाम इसीलिए लिखा है. आपने कोविड के पेंडेमिक के बारे में पिछले 2-3 सालों में कोई ऐसा मीडियम नहीं देखा होगा, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, आपस में बातचीत, कम्युनिटी में बातचीत, जहाँ पर कि पेंडेमिक की बात ना होती हो. आपने कब सुना होगा सुपरबग के बारे में? बहुत कम. लेकिन सुपरबग जैसे मैंने अभी दिखाया वो पेंडेमिक है. तो इसीलिए हम इन दोनों पेंडेमिक्स में एक बहुत बड़ा फर्क रखना चाहते हैं. COVID-19 is a noisy pandemic. Everyone has been making noise about it. Whereas the pandemic, due to resistant bacteria or superbugs, has been a silent pandemic. Please mark the word. It's a pandemic. It may be silent. That means it is causing damage and disease across the world without creating so much of noise. And one of the objectives of this session, where we are talking to millions of people, is to create a noise about the pandemic of superbugs, so that you all can contribute towards minimizing the impact of superbugs. जब मैं इस सेशन के एंड में पहुंचूंगा तो दूसरी या तीसरी स्लाइड सेशन खत्म करने से पहले जो होगी उसमें मैं आपको कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट्स बताऊंगा जो आप हर रोज अपनी दिनचर्या में उनको रख सकते हैं, ताकि हम जो ये पेंडेमिक चल रहा है उसके असर को काफ़ी हद तक कम कर सकें. तीसरी डेफिनेशन मैं देना चाहता हूँ, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. क्योंकि हम सुपरबग्स तो समझ गए कि सुपरबग्स वो हैं जहाँ पर कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करती. लेकिन एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं, ये आप सबको पता होगा, जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस जो ह्यूमंस या एनिमल्स में होती हैं उसमें काम की जाती हैं, ताकि बैक्टीरिया को मारा जा सके या उनकी ग्रोथ को रोका जा सके. और ये हम जो एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं वो बेसिकली उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो बैक्टीरिया से होती है. मैं अगली स्लाइड में भी थोड़ा सा और उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा. और जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं उसमें जो कॉमन है, जिसके बारे में आप सबको मालूम होगा, जैसे टाइफाइड फीवर है, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, एक तरह का डायरिया है जिसमें कि ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, या जख्म होता है आपका जिसके ऊपर पस बन जाती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आदमी हो या जानवर हो उनको ट्रीट किया जा सके. लेकिन ये सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं होती. अब जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल साइंसेज ने इतनी सारी नई नई चीज़ें ला दी हैं ह्यूमन हेल्थ को अच्छा करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ की ड्यूरेशन, लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए, उन सब में भी एंटीबायोटिक का यूज़ होता है. कैंसर्स हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरी हैं, आपका ट्रांसप्लांटेशन है, हार्ट में आपने कोई चीज़ चेंज करी है, आपकी कोई नई इन्फेक्शन आ गई है, नई और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. इन सब में टेक्नोलॉजीज अपना रोल प्ले करती हैं.
लेकिन उसके साथ ही कि उनके ऊपर इन्फेक्शन ना आ जाए, उसकी वजह से सब किया कराया ख़राब ना हो जाए, हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आपके पास एंटीबायोटिक्स नहीं है तो आपने सबसे अच्छी सर्जरी भी कर ली, ट्रांसप्लांटेशन भी कर लिया, हार्ट को भी ठीक कर लिया, लेकिन उसके बाद इन्फेक्शन आ जाती है और वो पेशेंट उससे ठीक नहीं हो पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है एंटीबायोटिक्स का, जिससे कि वो जितनी टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही हैं उनको निगेट होने से बचा सकती हैं। चलिए एक डेफिनेशन और देखते हैं। हम एंटीबायोटिक की बात करते रहे हैं। एंटीबायोटिक एक ग्रुप है जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में आता है। अब एंटी माइक्रोबियल क्या है, इस शब्द में दो हिस्से हो गए, एंटी और माइक्रोबियल। माइक्रोबियल मीन्स वो सब तरह के जर्म्स कॉमन भाषा में, जिसमें कि हम बैक्टीरिया भी रखते हैं तो वो एंटी बैक्टीरियल हो गए, जिसमें हम वायरसेस भी रखते हैं जैसे HIV है, वायरल हेपेटाइटिस है, उन ड्रग्स को एंटी वायरल ड्रग्स बोलते हैं। कुछ फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जो स्किन में होती हैं, लंग्स में हो जाती हैं, वो एंटी फंगल ड्रग्स बोली जाती हैं। और कुछ पैरासिटिक डिजीजेज हैं जैसे मलेरिया है, उनको ट्रीट करने वाले ड्रग्स को और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को एंटी पैरासिटिक ड्रग्स बोलते हैं। इन सब चीज़ों को आज की इस सेशन में हम एंटीबायोटिक्स पर ज़्यादा बात करेंगे और बैक्टीरिया पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखना चाहें तो एंटी माइक्रोबियल वुड मीन all those agents which are used to treat bacterial, viral, fungal or parasitic infections. And the message I want to give you, there is a resistance coming up in all these categories of germs against their particular drugs, which is making a very, very serious challenge to the global fight against infectious diseases. और इस रेजिस्टेंस को, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, किसी भी इन चारों चीज़ों में से उसे हम AMR का नाम लेते हैं। और मैं इसलिए इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा था क्योंकि बहुत जगह आप लोग सिर्फ शब्द AMR सुनेंगे। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ए ब्रॉडर टर्म, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इज ए टर्म रिस्ट्रिक्टेड टू बैक्टीरिया। इसी तरह वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और अब एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस से हो क्या रहा है, हम क्यों चिंतित हैं इसके बारे में? हम इसलिए चिंतित हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, सेफालेक्सिन, वो सब आहिस्ता आहिस्ता इनइफेक्टिव होती जा रही हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। जब आप किसी पेशेंट को या एक एनिमल को जिसको वो बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये ड्रग देते हैं और अगर वो बीमारी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से है तो उसकी रिकवरी इजीली नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं। और फिर उसमें हम सब का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है और क्या तरीके हैं जिससे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब बातें अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको इन तीन लोगों को नमन करना चाहिए। These are the founders of modern era of antibiotics. You all must have heard about Alexander Fleming, the Britisher who discovered penicillin for the first time sometime 1928-29. But then that drug was converted into a compound which was used in the human beings and in the animals by his two colleagues. So these three are the people who brought antibiotics into the realm of clinical medicine sometimes in early 40s when the Second World War was still going on. And these drugs had dramatic effect at that time and has been causing a dramatic effect till date. And this is the reason why these drugs are also called as magic bullets. This is the common name which has been given, but now we are reaching a stage where the magic bullets are losing their magic, and which is something, a big tragedy for the mankind. So these have been the most commonly used medicines in humans, livestock, fisheries, poultry, everywhere where there are infectious diseases. And I'll show you a graph. Somehow this is not from India. This is from the USA from the year 1900 to 2000. Look at the red colored thing. It is coming down dramatically. This was the incidence of infectious diseases, which was brought down to almost zero level by a combination of antibiotics, vaccines, and sanitation. These three things in America, when these were put together, used together, and then the impact was that the antibiotics could bring down the incidence of infectious diseases to virtually nil. And when 1960s, 1970, this thing was shared with the Surgeon General of the USA, that means the top technocrat
for health services in the United States of America, he made a very stupid statement, I should say, and not a right word, but it was a stupid statement, because he said that it is time to close the book on infectious diseases. He thought we have conquered all the infectious diseases, we will not need any antibiotics now onward, we can close this book on infectious diseases, but that was not to be. That was not to be, and we know it even today. He said this thing, Bill said this thing sometime in 1968, and now even today, after 55 years of his statement, we are now struggling more with bacterial infectious diseases than what we were struggling in 1960s or 7. Now this is what the rise and fall of antibiotics. No new antibiotics have come in, no new antibiotics are being discovered, and I'll give you the reason little later for that, but the infectious diseases are coming up. Infectious diseases, morbidity due to them, that is disease due to them, impact of disease due to them, and deaths due to them have been coming up. And new infectious diseases have been coming up, infecting humans and animals, and that's the reason whatever statement Bill Stewart made doesn't make any sense even today. Now we have reached a stage where we are rapidly moving towards a post-antibiotic era. Just imagine before 1940s, the Second World War, when there were no antibiotics, even a small infection could kill a person. You could not do a surgery because there were no antibiotics. We are now reaching almost the same stage where even the minor injuries can become fatal, and whatever modern technological advances we have are severely compromised. You cannot operate on heart, you cannot operate on kidney, cannot operate on lungs, you cannot put something new, you cannot make life of a cancer patient longer because he gets infected with bacteria and you don't have the right antibiotics to treat him of these kind of diseases. Now the question comes, you may ask, this is a very logical question, why are antibiotics becoming ineffective? Well, we discovered them 80-90 years back, they did a wonderful job, we call them magic bullets. Why are they becoming ineffective? Well, there are two reasons, simple two reasons, and then we will expand onto those two reasons. One, we are using antibiotics to kill bacteria. So bacteria are our enemy and we are trying to kill. So what does the enemy do? Enemy has to find ways to survive against our weapon. Our weapon is antibiotic. So bacteria have been developing and executing very efficiently their survival mechanisms, and I'll come to that in next slide. The second reason is, which is more important, is our own stupid way of handling antibiotics. We have always thought they are magic bullets, they can be used anywhere, in any quantity, at any time, for any disease, irrespective of the fact whether it was indicated or not indicated. And that these are the two reasons, and the combination of these two is that the bacteria have now become resistant to the action of most of the affordable antibiotics. That means many of the bacterial subpopulations have become superbugs. So I'll take up these two reasons so that we all are clear why it is happening. Now let me make a statement. Some people laugh at it, but that's the truth. Bacteria, the germs, are smarter and more experienced than humans. You can say bacteria is such a small thing, such a microstructure, and we are such evolved structure with such high level of intelligence, but they are smarter and more experienced than humans, and I'll try to explain it. As and when a new antibiotic was discovered, starting with penicillin in 40s, immediately after that the resistance to that antibiotic was also detected. That means bacteria were very quick to detect that a new weapon has come and we have to develop a new mechanism against that weapon. And this is the chart. This may not be very clear on your screens, but this chart shows a large number of antibiotics and the year when they were discovered, and the year, within a year or two, there were resistance developed to that. So that is the ingenuity of the bacteria or the germs, that they could very quickly develop resistance to the weapon or the antibiotics that we, the human people, developed. And then they survive. Bacteria develop mechanism to survive in an environment where even high density antibiotics are used. Take an example of hospitals. ICUs, maximum antibiotics are used there, and maximum resistance is also seen there, because the bacteria try to survive against the onslaught
by a large number of high-end antibiotics in ICUs, and they ultimately come out with mechanism by which they can survive that action by the antibiotics. And then there are several mechanisms by them. Bacteria communicate with each other. No one knows. You don't listen it. You don't understand their language. It's a secret language. But they talk to each other and then they are together. They have a quorum sensing mechanism. They live in communities. They have a biofilm around the whole community of bacterium, which protects them from various kind of antibiotics. When they are under pressure, they accelerate the mutation. They change their genetic structure in a faster mode. They navigate, they move from the site where antibiotics are present. And these are the natural things. If we are attacked by an enemy, this is what we are all going to do. Going to protect ourselves, going to run away from that site. That's exactly what the bacteria do, which are single cell structures. And yet they have got so much of intelligence, so much of smartness that they try to act against our weapon. And they learn from it, they memorize whatever we do, and then they adapt to a new situation. That's their smartness. And this smartness is the one which is causing resistance in them, and our antibiotics are failing to treat infections with them. Now I've written second word also, experienced. Now what are experienced? Bacteria are far more experienced than humans, far more. Now this is our mother planet on one side of the screen. The age of our mother planet is 4.5 billion years, right? Everyone knows it. The bacteria appeared on this earth 4 billion years ago, right in the beginning when the earth came into existence. Homo sapiens, or we, the human species, we appeared on this planet on 200,000 years ago. Compare the experience between 4 billion years of existence and 200,000 years of existence. Huge, huge difference. And that experience has given them additional power, evolutionary thinking, evolutionary weapons to the bacteria to survive under difficult circumstances. So this experience is also in favor of bacteria surviving. So these are the two reasons why the bacteria have been able to survive, because of their smartness, because of the experience of on this planet. Now that is at a higher level. Now come at the single bacterium level. How does it change itself against antibiotic? How does it protect itself from the antibiotics? We all have got a genetic structure. All our cells have got a gene system, a nucleus and then genes. Bacteria have a very simple genetic structure, but the genetic structure undergoes continuous changes in the form of mutations. There are continuous mutational changes. From one generation to next generation, there is some mutation change, and that mutation change may confer उस बैक्टीरिया के ऊपर वो एक अलग शक्ति दे दे, एक कवच दे दे, जिससे कि जो एंटीबायोटिक हम उस पर यूज़ करते हैं उनका उसके ऊपर असर नहीं होता. ये एक तरीका है जो बहुत कॉमन है और सदियों से चला हुआ है. और इसके लिए आप अगर किसी ऐसी जगह जाएं जहां आज तक कोई इंसान नहीं था, जानवर नहीं था, कोई एंटीबायोटिक नहीं था, और आप वहां से अगर बैक्टीरिया ढूंढेंगे तो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि इस म्यूटेशन की वजह से होगा. लेकिन यही एक सिर्फ कारण नहीं है. बैक्टीरिया के पास और एक तरीका है. अगर एक बैक्टीरिया के अंदर कोई रेजिस्टेंस है तो वो दूसरे बैक्टीरिया को नज़दीक बुला के उसके साथ बातचीत करके, जो मैंने आपको पहले साइलेंट लैंग्वेज बताई थी, वो अपने रेजिस्टेंस की जो जीन है उस जीन को वो दूसरे बैक्टीरिया में भी डाल देता है. डायरेक्ट डाल देता है या एक वायरस के थ्रू डाल देता है. वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. आज के सेशन में हम उन मैकेनिज्म नहीं जा रहे, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए अगर एक बैक्टीरिया के बीच में कोई रेजिस्टेंस की जीन है तो दैट जीन कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बैक्टीरियम वेरी इजीली and in a very short period. So what happens when the resistant gene moves into another bacterium, that also becomes resistant to all those antibiotics. Now this genetic changes in the bacterium do not remain at the gene level. Now the genetic system is same as in bacteria as in us. We are what our genes are. Similarly in bacteria, if there is a resistant gene, it will manifest as a resistant pathogen or resistant organism, and these are the different functions which are the phenotypic functions, जो कि नज़र आते हैं हमको कि बैक्टीरिया की जीन में चेंजेस आए तो बैक्टीरिया ने ये नए कैरेक्टर्स एक्वायर कर लिए ताकि वो एंटीबायोटिक को नलीफाई कर सके. क्या कैरेक्टर हो जाते हैं? वो एंटीबायोटिक को अंदर ही नहीं आने देता, अपने उसके अंदर आने की क्षमता को कम कर लेता, अपनी दीवार को और सख्त कर लेता है.
वो जो एंटीबायोटिक अंदर आती है उसको धक्का मार के बाहर कर देता है, चाहे उसको आप अंग्रेजी में कह दीजिए इसको इट्स पम्प्ड आउट, लेकिन वो धक्का मारता है भैया तू बाहर की चीज़ है मुझे नहीं चाहिए। या वो उसे अपने अंदर से एक ऐसे एंजाइम बनाता है जो उस एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, जैसे पेनिसिलिन एक है, पेनिसिलिन को मारने के लिए बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज नाम का एक एंजाइम बनाता है, वो जैसे ही पेनिसिलिन के नज़दीक पहुंचता है वो पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कर देता है, तो पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। उसके अलावा स्मार्टनेस देखिए बैक्टीरिया की, जितनी ज़्यादा आप पेनिसिलिन डालेंगे उतना ही ज़्यादा वो पेनिसिलिनेज बनाता रहेगा, ताकि वो जितना आप दुश्मन के ऊपर जोर डाल रहे हैं दुश्मन उतना ही और स्ट्रांग होता जा रहा है और पेनिसिलिन का असर अपने ऊपर वो नहीं होने देता। सिमिलरली वो अपने आप को भी बदलता रहता है बैक्टीरियम, और एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर को भी बदलता रहता है, ताकि बॉटम लाइन इज स्टिल सेम, ताकि वो जिंदा रह सके। ये जिंदा रहने की उसकी स्ट्रांग डिज़ायर और इच्छा होती है जिसके लिए वो सब काम करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस कैसे आ जाता है? अब वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कुछ हैं, आपने उसमें कुछ एंटीबायोटिक डाला तो 95% के करीब मर गए, 5% जो रह गए वो रेजिस्टेंट थे। जो रेजिस्टेंट थे अब उनको कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो तो एंटीबायोटिक से मरते नहीं, वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे एंड देन दे बिकम द डोमिनेटिंग पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो चाहे एक सिचुएशन में आपके पास टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है वो सेंसिटिव है किसी भी एक ड्रग को, से सिफालेक्सिन को, लेकिन जब उसमें रेजिस्टेंस आना शुरू हुआ तो सिफालेक्सिन ने जो सेंसिटिव थे जो मरते थे उनको तो मार दिया, पर जो रेजिस्टेंट थे अब उनको बढ़ना शुरू हो गए और उनका नंबर इतना बढ़ गया कि वो मेन पैथोजन बन गए आपके टाइफाइड फीवर करने के लिए। तो ये तब होता है जब हम एंटीबायोटिक का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते, जब हम उतनी एंटीबायोटिक देते हैं जो सारी उसको बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं है, कम क्वांटिटी में दे रहे हैं या लंबे टाइम तक दिए जा रहे हैं बिना सोचे कि क्या ज़रूरत है या नहीं है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, जहाँ भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, आप एनिमल्स में यूज़ कीजिए वहाँ भी होगा, आप एग्रीकल्चर में आजकल बहुत यूज़ हो रहा है जो लोगों को अभी नहीं मालूम है। पहले लोग सिर्फ पेस्टिसाइड की बात करते थे, फंजीसाइड की बात करते थे, अब एग्रीकल्चर में भी बहुत एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहे हैं, तो उनके साथ वहाँ भी वो बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वहाँ भी बैक्टीरिया में ये सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जब एक ड्रग का रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसके बाद जब दूसरी ड्रग आप शुरू करते हैं तो दूसरी का होता है, फिर तीसरी का होता है, फिर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं जिनको आप लोग सुपरबग्स बोल देते हैं। तो ये तो बहुत सारी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो किसी भी एनवायरनमेंट में जहाँ एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया का इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पर रेजिस्टेंस होना लाजमी है और उसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये है जो सुपरबग का आपको टिप नज़र आता है एक आइसबर्ग का, लेकिन वो पिछले कई सालों से हम लोग गलत तरीके से एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं तो ये सुपरबग आ जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ जो 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने नोबेल प्राइज़ ओरेशन में क्या बोला था। आज भी वो उतना ही सच है जितना उस दिन सच था, लेकिन हम लोग आज भी उसको नहीं सुन रहे, ये हमारी ट्रेजेडी है। उन्होंने कहा था इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मेक माइक्रोब्स रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। रिमेंबर 1945, एट दैट टाइम द ओल्ड वाइज मैन इज टॉकिंग अबाउट इट. It's not difficult to make them resistant. And then he says the time may come when penicillin can be bought by anyone in the shops. Isn't it true today? आप किसी केमिस्ट शॉप में जाइए, कोई एंटीबायोटिक मांग लीजिए, इजीली मिल जाता है. And then there is a danger that the ignorant man, we all are even today ignorant. Ignorant man may easily underdose himself and by exposing his microbe to non-lethal quantities of the drug make them resistant. Now, this is what I was trying to show in the previous slide, but this is what the grand old man had said in 1945, that this is going to happen, and this is exactly what is happening, and we are not learning from these things. Now I'll give you four or five things from which I have developed from the cartoons of like Mr. R.K. Lakshman, and you will relate with it, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ होती हैं या नज़र आती हैं। घर में सब लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी हो जाए एंटीबायोटिक ले लो, ठीक हो जाते हैं सब उससे। ये यूज़र का बिहेवियर है। आपके घर में भी भाई बहन माँ बाप सब बोलते हैं अरे ये हो गया एंटीबायोटिक ले ले ठीक हो जाएगा। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन एंटीबायोटिक कितनी लेते हैं, कब लेते हैं, कहाँ लेनी है, ये कोई नहीं जानता, पर लेनी सब ने है। ये अब आप इसके बाद चलिए आगे, तो एक आपको मिलता है डॉक्टर जो कि क्वालिफाइड नहीं है, उसे नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि अगर बुखार हो गया है तो आप एक इंजेक्शन लीजिए मुझसे, उसके बाद मैं आपको कुछ रंगीन कैप्सूल दे दूंगा, आप ठीक हो जाओगे।
क्या इंजेक्शन किस एंटीबायोटिक का कितना देना, कितना नहीं देना, 2 दिन देना, 1 दिन देना, कोई चिंता नहीं उस चीज़ की, वो भी सब डोज हो रही है, सब लीथल डोज दी जा रही है। क्वालिफाइड डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, वो भी जो हैं वो भी एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डायग्नोसिस नहीं बन रहा एम्पीरिकली। जियो के मीन्स की भी क्या डायग्नोसिस है, गॉड ओनली नोस। डायग्नोसिस सिर्फ भगवान को मालूम है, लेकिन मुझे तो बचाना है, तो मैं सुपर इन्फेक्शन नहीं होने देना चाहता। और पेशेंट मेरे से मांगता है कि भाई मुझे कोई दवाई दो, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, बिना कुछ सोचे अपना वो एंटीबायोटिक उसको भी दे दिया जाता है। ये सब सिचुएशन वो हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन है। आई हैव जस्ट यूज मिस्टर लक्ष्मण's कार्टून्स जस्ट टू शो देम इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। गरीब आदमी, डॉक्टर पर्ची देता है, बहुत अच्छी है, दवाई भी ठीक है, डायग्नोसिस भी ठीक है, केमिस्ट के पास जाता है, कहता मुझे ये दवाई दे दो, केमिस्ट कहता 100 रुपये की लगेगी, वो कहता मेरे पास तो 40 रुपये हैं भाई, मुझे 40 रुपये में दे दो जो भी है। तो वो 40 रुपये में क्या देगा? वो 40 रुपये में या तो आपको कम दवाई देगा, अगेन गोइंग बैक टू व्हाट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सेड कि आपको सब लीथल डोज मिल गई, या वो आपको ऐसी दवाई देगा जो क्वालिटी दवाई नहीं है, जिसमें वैसे ही एंटीबायोटिक कम है, तो 40 रुपये में आपको वो दे देगा। तो ये एक इकोनॉमिक इशू बन जाता है। ये सब चीज़ें हर रोज़ हमारे आसपास हो रही हैं, होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, पर हमको इन सब चीज़ों को रोकना ज़रूरी है अगर हमको अपनी एंटीबायोटिक्स को आगे रखना है। ये एक मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ। कभी ये मत सोचिए कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिर्फ एक डॉक्टर की प्रॉब्लम है या हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है या वेटरनरी सेक्टर की प्रॉब्लम है। ये सिर्फ बायोलॉजिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, ये एजुकेशनल प्रॉब्लम है। और मैं एक सवाल आपको बोलूँगा, आप आराम से बैठ कर सोचिए, आपके घर में जब किसी को एंटीबायोटिक मिलती है 5 दिन के लिए और वो 3 दिन में ठीक हो जाता है, तो आप उस एंटीबायोटिक का क्या करते हो? मोस्ट लाइकली आप उस एंटीबायोटिक को घर में रखोगे। अगले कुछ दिनों के बाद अगर आपके भतीजे को, भाई को, कज़न को, किसी को जरा सा भी फीवर हुआ, तो वही एंटीबायोटिक उठा के आप उसको दे देते हो। तो सेल्फ मेडिकेशन होता है, इट्स वेरी कॉमन थिंग विच इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि हम अगेन वही कर रहे हैं कि जो डोज देनी चाहिए हम वो नहीं दे रहे, हम उससे बहुत कम दे रहे हैं, और उससे बैक्टीरिया को और ज़िंदा रहने का और ताकतवर होने का मौका दे रहे हैं, और वो आगे के लिए, हम सब के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक मेजर इशू बन जाता है। अब ये लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कहीं पर आप कर लीजिए, जैसे मैं पहले कर रहा था, ह्यूमंस, एनिमल्स, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, सब सेक्टर में यही चीज़ हो रही है। एनिमल्स में एक बहुत ही गलत चीज़ हो रही है जो शायद आप लोगों को मालूम हो, स्पेशली जो लोग गांव में होंगे या जिनके पोल्ट्री फार्म होंगे या जिनके पास एनिमल के फार्म्स, लाइफ स्टॉक फार्म होंगे या फिशरी के पॉन्ड्स होंगे, वहाँ पर एंटीबायोटिक दी जाती है एज ग्रोथ प्रमोटर्स। जानवर को या पोल्ट्री को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप उसको एंटीबायोटिक इसलिए दे रहे हो कि इसको कोई बीमारी हो ना जाए और इसकी वज़न बढ़ता रहे। उसका वज़न बढ़ेगा तो आपको उसका ज़्यादा मोल, ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि गांव में और एनिमल सेक्टर में होती है। एंटीबायोटिक्स आर गिवन एज ग्रोथ प्रमोटर्स, जबकि वही बैक्टीरिया एनिमल्स में है और वही बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में है। तो जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और गलत एंटीबायोटिक देते हो, तो वहाँ जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारी फूड चेन के थ्रू, हमारा खाना कितना वहीं से आता है, गांव से, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो एग्स हो, ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम आवर फूड चेन राइट अप टू अस, एंड वी गेट इन्फेक्टेड विद द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। दैट्स द मैकेनिज्म बाय विच। और अगर आप ये देखना चाहो कि कितनी एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज़ होती है, तो अमेरिका जैसे देश में जितनी एंटीबायोटिक्स 1 साल में कंज्यूम होती हैं, सिर्फ 30% ह्यूमन बींग्स में है, 70% आर इन एनिमल्स। सेम इन चाइना. China uses maximum quantities of antibiotics. We also, India is at number 4. We also use lot of antibiotics in our animal sector. And what happens, resistance comes up there and then it moves to the humans, and from one set of humans it moves in the modern era of transportation to any country in the world. And that's how the pandemics of these resistant bacteria also continue to happen. This is how I was telling, resistant genes easily move across different sectors. From poultry, from fishery to human, from humans to animals, from agriculture to humans. So all these things, they have got a free movement, no visa requirements. They move from one place to another place without any restriction. And that's what our major problem is. Now you can ask me a question, भाई इससे हो क्या रहा है? बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस हो गया, एंटीबायोटिक ने नहीं काम किया, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपको ट्रीटमेंट लंबे टाइम देना पड़ता है उस पेशेंट को, उसकी बीमारी लंबे टाइम की हो जाती है, उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको एक्सपेंसिव ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती है, आपको और डायग्नोस्टिक यूज़ करने पड़ते हैं, भाई ये पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा।
हेल्थ सिस्टम पर बर्डन है, फैमिली पर बर्डन है, आप सर्जरी नहीं बड़ी कर सकते, और वही रेसिस्टेंट बैक्टीरिया उस पेशेंट से बाकी लोगों में जा रहा है। तो जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सारी दुनिया में काम हो रहा है, वो सब चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया की बात नहीं है, ये बात टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट की है। अगर आप कुछ नंबर देखना चाहो तो ये एक बहुत बढ़िया स्टडी है जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले कमीशन की थी। पिछले साल 1.27 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन विद रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे अगले 10, 15, 20 साल में, तो 2050 में ये उम्मीद है कि 1 करोड़ लोग हर साल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से मरेंगे। और ये जो नंबर है 1 करोड़ का, ये नंबर अगर आप रोड साइड एक्सीडेंट्स और उसके साथ आप कैंसर को भी जोड़ लें, वो तब भी इतने लोग नहीं मरेंगे जितने इन सब चीज़ों से मरेंगे। और टोटल इकोनॉमिक लॉस अगर आप देखना चाहें तो $100 ट्रिलियन सारी दुनिया को इसका नुकसान होने की संभावना है। ये तो सब तो हमारी समस्या होगी। हमने ये जान लिया ये क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर रहे। और आगे अब हम इस चीज़ को वरीड हैं, लेकिन हमारे साथ साथ आप और हम तो वरीड हैं, बट क्या हायर लेवल पर भी कुछ लोग वरीड हैं? लेट्स सी हु आर द पीपल हु आर वरीड अबाउट इट। देयर आर सम पीपल हु इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग, एंड दैट्स यूजुअली द मोस्ट ऑफ दीज global magazines or media. Are they worried about it? You can see this Newsweek cover. This was 1993, 30 years back. Even at that time they say, is it the end of miracle drugs? Economist, it has also been talking about why our antibiotics are not working. And near India, near our own home, the India Today in 2013 took out a special issue and had that your antibiotic is sick. We are sick, that's a different thing, but even now the antibiotic is sick, that means it's not working. It is becoming useless now. Now, this is how the influencers have been talking, but we have not taken much action. But then, who are the ones who are now trying to take action? The international agency like WHO, FAO, World Organization for Animal Health, United Nations also took a serious note of this thing. And of course, countries have started making some of their own action plans. India made its first national action plan in 2017, which ended last year. And now India is in the process of making its next national action plan for next 5 years, bringing together all sectors wherever antibiotics are used, human, animals, agriculture, environment, so that some solutions can be found how to move forward with these things. So what are the solutions? I'm not going to technological solutions, I'm just talking about two broad solutions. First solution is discover new antibiotics. You can always say, अरे भैया resistance हो रहा तो नई बना लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक एंटीबायोटिक नहीं काम करती, आप एक और बना लो। आपके पास एक पहले साइकिल थी, नहीं काम करती, आपने नई साइकिल बना ली। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट सेट ऑफ एक्शन इज डिस्कवर न्यू एंटीबायोटिक्स और देयर ऑल्टरनेटिव्स फास्टर देन द इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन नई एंटीबायोटिक को डेवलप करने में $1.5 से $2 बिलियन का खर्चा आता है, और 10 से 12 साल लगते हैं उसको बनाने में। आप बोलो कौन सी बहुत बड़ी बात है, जब ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, 10-12 बिलियन डॉलर क्या चीज़ है। लेकिन इसके साथ जो एक चीज़ होती है कि जैसे ये दवा मार्केट में आती है, वैसे ये फिर इरेशनली और गलत तरीके से यूज़ होती है, और फिर इसमें 6 महीने में रेजिस्टेंस आ जाता है। तो जो इस पर रिसर्च कर रहा है, जो इसको बना रहा है, स्पेशली प्राइवेट इंडस्ट्री, उन्होंने 12 बिलियन लगाए, लेकिन उनको 1 साल में मिला कुछ नहीं उसमें से। तो वो कहते हैं वाई शुड वी डू इट? वाई शुड वी नॉट डेवलप समथिंग फॉर डिजीज लाइक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, जो सारी उम्र चलनी है और दवाइयाँ भी चलनी है, तो हमारा प्रॉफिट भी है और दवाई भी चल रही है। एंटीबायोटिक बनाने वाली, आप लोग हैरान हो गए, कई कंपनियां बंद हो गई हैं, वो नहीं बनाना चाहती इस चीज़ को, क्योंकि उनको भी इसमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। तो ये, और आप देखिए पिछले 30 सालों में कोई नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक हमें नहीं मिली है। जो भी नई एंटीबायोटिक आती है वो पुरानी एंटीबायोटिक का छोटा मोटा वेरिएशन है। कोई अगर आप बोलोगे नई क्लास हमको मिली है, तो ऐसा नहीं है। सो वी आर ऑन इन ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन विच एवरीवन मस्ट रिकॉग्नाइज। Now, दूसरा सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन इज मच सिंपलर टू अंडरस्टैंड। हम एंटीबायोटिक कहाँ यूज़ करते हैं? जब बीमारी होती है। अब बीमारी मत होने दीजिए, बीमारी को रोकिए। तो जैसे बचपन से माँ बाप कहते थे भाई अच्छा खाना खाओ, साफ सुथरे रहो और हाथ वगैरह धो, वो सब चीज़ें क्यों कहते थे माँ बाप हमें? इसीलिए कहते थे कि हमें छूत की बीमारी या इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो।
और अब तो वैक्सीन आ गई हैं, आप हर चीज़ के बारे में वैक्सीन लगा लीजिए। ये सब चीज़ें इंसानों में भी और जानवरों में भी करने की ज़रूरत है ताकि हम एंटीबायोटिक्स के यूज़ को उतना ही कम कर सकें। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है जो कि हम सब लोग कर सकते हैं, और मैं आपके इसके बारे में इसके एंड में आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। अब हमने ये पहले बात करी थी कि हम 4 सेक्टर्स में जो बात करते हैं कि हर जगह एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं। अगर हमको ये रेजिस्टेंस कम करना है, एंटीबायोटिक रैशनली यूज़ करने हैं, तो हमको चारों सेक्टर्स में काम करना ज़रूरी है। और अगर हमको चारों सेक्टर में काम करना ज़रूरी है इकट्ठे, साइमल्टेनियसली, ह्यूमन, एनिमल, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वर्किंग टुगेदर। और अगर आप लोगों ने कभी वन हेल्थ का शब्द सुना हो, सो दिस इज़ व्हाट वन हेल्थ इज़ ऑल अबाउट। वन हेल्थ सेज कि human, animal, environment are intertwined. They are linked with each other in such a way that one influences the other. तो अगर आप ह्यूमन बीइंग के ऊपर या एनिमल के ऊपर उस चीज़ का बचाव करना चाहते हैं तो आपको तीनों ही मेजर सेक्टर्स पर काम करना पड़ेगा फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। और दिस इज आर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विच नीड टू बी डन बाय एवरीवन टुगेदर। इसीलिए जो जितने भी दुनिया में प्रोग्राम्स बन रहे हैं, इंडिया का भी जो नेशनल एक्शन प्लान बन रहा है AMR का अगले 5 साल के लिए, दे आर ऑल बेस्ड ऑन वन हेल्थ अप्रोच, so that everyone works together to minimize the emergence of resistance and the impact of resistance on the human health. Now this is how we can work together with different sectors. We can coordinate together, we can collaborate, we can cooperate, we can communicate with each other, and we can have a joint commitment towards minimizing the impact of these resistant pathogens. Well friends, last की 2-3 slides हैं छोटे छोटे सिंपल मैसेज देने के लिए आपको। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, आप उनको सुपरबग्स भी बोल सकते हो, आर द ह्यूज ग्लोबल चैलेंज। ये सिर्फ चैलेंज आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्टेट में या दिल्ली में या इंडिया में नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है। रादर एक ये स्टेटमेंट दी गई है अभी, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी इन इट्स फाइट अगेंस्ट infectious diseases is resistance to antibiotics. So that is your biggest challenge. So that's why it's a global challenge, it's the biggest challenge, it's a silent pandemic, and that threatens our existence. That threatens our existence. Rational use of antibiotics by all prescribers, all those who prescribe, whether veterinarian or a human doctor or whatever it is, and the users is critical. Everyone has to make a rational use of antibiotic. It is critical to avoid this world sliding into post-antibiotic era. This is clearly a one health issue, only health sector alone. You may do anything, you won't be able to contain it, because you containing your sector through your food chain, it comes from the animals, it comes from the aquaculture, it comes from the agriculture. So it has to be taken as a one health issue, and everyone has to work together. And everyone doesn't mean don't leave it to the government, don't leave it to the hospitals, don't leave it to the veterinarians, don't leave it to the farmers. Everyone would mean you also. All of you who are audience today, all your friends, relatives, everyone has a role to play in preserving efficacy and prolonging life of these antibiotics for next generation. So we all can contribute, but what can you contribute? I'm not asking you to get into the research or get into the hospital environment and do something. We are asking you to do something at your own level, whatever level it may be, whatever context it may be, whatever location it may be for you. Follow hand hygiene. COVID has also taught you hand hygiene. The whole idea of hand hygiene for any microbial disease, whether viral or bacterial, is to do an infection control, prevent spread of infection. If the infection doesn't get spread, people don't fall sick, you don't need antibiotics. Cover mouth while coughing and sneezing, again message from COVID, and I think we need to continue it. People have already forgotten it. This morning I was driving from my hotel to this place, and the taxi driver was coughing non-stop without any mask. And I had to ask him. He said, "नहीं साहब, कई दिन से चल रहा है तो, कई दिन से चल रहा है, but there is no etiquette for cough." And then I'm sitting in the closed cab, so maybe I have already contracted a bacterial or a viral infection from him. So do it. These things don't cost anything, and these are the things which traditionally our parents have been telling us right from our childhood. There is a great wisdom there, whatever our parents have told us. Improve sanitation. सब लोग कहते हैं सफाई रखो, सफाई रखो। महात्मा गांधी भी कहते रह गए कि भैया क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि अगेन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है उससे।
whatever vaccines are available, take them. Take nutritious food, build your own immunity. Against COVID, everyone talked about immunity. Some talked in the wrong way, some talked in the right way, yes. But then everyone talked about the immunity, and that immunity is something which is very important. Your own body can fight the infection, so you don't need an external agent or an antibiotic. When you are given an antibiotic due to a disease, take it as prescribed. 5 days, 3 times a day, take it 3 times a day. Even if you start feeling better on day 2, complete that course for 5 days. Do not skip doses. मैं तो ठीक हो गया, अब क्या ज़रूरत है, या ये दवाई गर्म होती है, या इस दवाई से मुझे नींद नहीं आती. No, nothing doing, that's not going to help. Not you, not your next generation, not the country, and not the world at all. Do not save your antibiotics at home for later use, and I talked about it earlier. Do not take antibiotics which are prescribed for someone else. किसी और को बुखार किसी कारण से हुआ था, उसको टाइफाइड हुआ था, आपको निमोनिया हो रहा है. एंटीबायोटिक्स हैव टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन, डिफरेंट डोजेज. डोंट डू इट कि उसको मिला था तो मैं भी ले लेता हूँ भाई. दैट डजंट वर्क. दैट इज हार्मफुल टू अस एंड टू द वर्ल्ड एज सच. एंड रिड्यूस अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एग्रीकल्चर and in veterinary sector, where cleanliness, sanitation, biosecurity can provide much better results than giving antibiotics to animals or to the plants. And believe me, these are the things you can do it. There's no problem. No one can say that no, I can't do any one of these things. These are the simple things which you all can do or we all can do. And if you don't do these things, this is the last slide please. If you don't do these things, I'll take you back to the history. They say if you don't follow history, you repeat history. We don't want to repeat history, but that's exactly what's going to happen. Before Christ, many years before that, anyone fallen sick, he used to take a route. The physician will say, take this route. Then after that, when they say, no, the route is bad, you start praying to God. So we started praying to God. After that, say, no, praying is a superstition, drink this potion. Some kind of concoction that was given to the patients. After some year, when the penicillin came, oh, don't take anything, start taking penicillin. Then the penicillin became resistant, and then they said, okay, take tetracycline. And then several loops, several antibiotics, we kept on moving from penicillin, tetracycline, erythromycin, chloramphenicol, cephaloxins, blah, blah, blah. We kept on moving there. And to all these, resistance kept on coming up because of what we were doing. And what we started seeing were multi-drug resistant organism and the total drug resistant organism or superbugs. But yet then we said take multiple antibiotics. Today, if someone is admitted in an ICU or in a serious condition in hospital, he gets 4 or 5 antibiotics simultaneously because the doctor is trying to cover up each and every infection. But by 2050, if you don't do anything, the bugs have won. No antibiotics would be available. And then we will say, okay, start taking the same route. And we go back to the same 2000 years before Christ. So that's what is going to happen. That's what we are going to stop. And we don't want to be in this kind of situation where in a hospital, आपने किसी और को बुला लिया जादू वाले को भैया ये कर दे हमारा पेशेंट ठीक हो जाए. But that's what we are going to do. So we need to preserve this resource of antibiotic, which is a precious resource, and we need to work together for it. And thank you very much for your patient hearing. Thank you very much. Thank you so much, sir. We should thank you for a wonderful presentation and the tips you gave towards the end. And like you said कि हम कोविड के बाद वो precautions भूल गए हैं. और आपने जो एग्जाम्पल दिया कि आपके कैब ड्राइवर, ये बहुत नॉर्मल है. ये आजकल देखा गया है, मेट्रो में हम ट्रैवल करें या पब्लिक प्लेसेस में, अब हम मास्क नहीं लगाते, कॉफ भी करते हैं, सो दे आर लाइक नॉर्मल. ये तो पहले भी होता था. सो दीज टिप्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल एंड जैसा कि सर ने कहा हम भूल गए हैं, तो अभी हमें नहीं भूलना है क्योंकि वो बैक्टीरिया से भी हमारी अपनी लड़ाई है और वो हमेशा जारी रहेगी. एंड थैंक यू सो मच सर. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, सो मे आई आस्क? Sure. If this pandemic of superbugs is so dangerous, like you mentioned, so how come the common people are so unaware of it? People are unaware of it because of the fault of us. Us means the technical people. Okay. We have been taking it as a technical problem, and as I showed in one of the slides, it's not a technical problem. It's a behavior problem. Basically, it is a behavior problem, and we have never tried to address it as a behavior problem. Okay. Just putting a poster here, suppose I put a poster here, someone reads this one, doesn't bring about a change in the behavior. We need to bring about a change. And that's the reason why I have been always saying, bring in social scientists,
bring in communication experts who can understand the needs of the people, who can understand the level of understanding of communities, and then tell them not once but repeatedly how to use antibiotics rationally. It is such a rampant thing. I can give you one example. We are running short of time, but I did a survey in Indonesia many years back. I was with World Health Organization, Indonesia. Okay. We did an almost nationwide survey. 96% of the households were storing antibiotics. 96, virtually every household. Now, if they are storing, is storing for what? जैसे कुछ बुखार हुआ या कुछ हुआ, 2 गोली खा ली. So what is the ultimate end result? And to bring about a change in their behavior, one has to talk to them. Second thing, very important, and this morning both of us were talking about this thing, economic issue. It's used in the agriculture, it's used in the veterinary sector, is linked with the cost of the product that these two set of people develop, whether agriculture product or veterinary product. Now, they get more money if they feed cheaper antibiotics to their poultry animals or to the fish or to the agriculture. So that economic thing has to be looked into by providing some good alternatives. Okay. You don't do it, it's a huge battle, and that's why I was trying to emphasize to our audience that everyone has a role to play in mitigating the emergence of resistance. Otherwise, few years from now, we will have nothing in our hands. We would be as good as we were in the beginning of previous century, and that would be something very bad for all of us. Let's hope that won't be the case. Yeah, let's hope. Dr. Chopra, do you want to ask anything? The main thing, I think what Dr. Bhatia is saying also is very important, is that antibiotics are a victim of their own, success. Because they work, they are overutilized, and because they are overutilized, they lead to resistance. So at the end of the day, they have to be treated as a matter of national, resource. It's a very important natural thing, which is only there if we are not indiscriminately utilizing it. If we do that, we'll be in a state where no medical advance will be of any use. You will have a kidney to transplant, but you cannot open the patient up to transplant because the patient will die from an infection. That's a very scary situation. And that is a very scary thought, because we will eventually get old and we will need transplants. Yeah. We will get cancers, we will need these antibiotics to survive. Right. And then it's very easy to blame the healthcare sector that they are not doing a good job. But at the end of the day, it's the environmental and non-medical application of antibiotics which is driving the resistance from the environment into the hospitals. And that is not very well understood, or there's not enough education about it. That whatever we put in the fields eventually hits us in the hospitals. And it's very easy to ban the utilization, but at the end of the day, unless we provide a viable economic alternative, that will never be implemented on the ground. Okay. It's like a plastic bag ban. You can ban the plastic bags, but if you don't provide a jute bag at the same cost with the same ease, No one will do it. it will never work. Okay. So equal economic ease is the issue. Okay. So when you said that there are two possible solutions you talked about, one was taking precautions and the other was develop a new antibiotic. But because of all the economic transactions and everything, that is not happening at the moment. So do we see a generation where this thought process would change and we'll see a new variation of an antibiotic? Any opinion maybe? No, definitely no. There are some people, there are several institutes which are working on development of new molecules. Okay. But more importantly, people are now working on alternatives to antibiotics, Okay. which is more important thing, which can be easily done and which may or may not have resistance at the other end of the tunnel. We don't know right now. But there is something called as a phage therapy. There is something called as lysins. There is something called as alternates from Ayurveda. And people are coming out with those things, doing research on that, generating evidence that these are the things which can be given instead of antibiotics, and yet patients should recover. So those are the positive things. People are working on it, and we are quite optimistic.
because for a patient it's immaterial whether he is given a pill of an antibiotic or a pill of an Ayurvedic drug. He wants to recover. He wants to get rid of the disease. Absolutely. So that's a big area where many people are working. There are some which have got proven efficacy. I didn't want to go into details because of the time constraint. There are some which are still in progress in R&D, and there are some which are being discussed about their possibility, not only in the human health sector but also in the veterinary sector. Absolutely. So we are optimistic about that. But then whatever resource we have, we need to preserve that resource. We need to preserve it, improve its longevity, not only for us, but also for our next generation. Right. And I can just close by saying one statement, which is not a very good statement. Before antibiotics became available 100 years back, the children who used to develop typhoid fever, of those 12% used to die because there was no treatment. Today we have reached almost 11%. Today 11% children who develop confirmed typhoid fever in developing world die because the infection is with the resistant pathogens, and the antibiotics to control it are either not affordable or not accessible. Okay. So we are reaching on a bad situation. Right. Yeah. That is very alarming data, I must say. But now that we have spoken about it, the silent pandemic of superbugs, I think be it science students, be it non-science students, they are definitely going to Google about it, and they're definitely going to take certain precautions, if not all, to not let this bacteria spread further. Sir, thank you so much, Dr. Bhatia, Dr. Chopra, for being a part of this program, and Dr. Gagan Gupta for bringing these experts to our studio, and we had a wonderful discussion. It was extremely informative, and I really hope that you enjoyed this program. If in case you have missed it, watch it on NCRT Official. That is our YouTube channel. And let me please tell you that our next program will be coming on 10th of March, and the topic would be Story of Water, जिसे हम कहेंगे पानी की कहानी. So please watch it. The expert would be Mr. Arundeep Aluwalia, and this would be on 10th of March. For now, we are wrapping up this particular program, and upcoming program is our virtual labs on self-paced and classroom teaching learning. So stay here and keep on watching. We have a lot of programs for all of you, and before leaving, I should just remind you that we are extremely proud about the fact that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. With that, we are wrapping up this particular program. Please take care of you, and thank you so much once again. Namaskar.